Bismillahirrahmanirrahim. This is Mushtaq Ahmad, your science teacher from APS Sabat. Today we will discuss class 7 science, page number 3 and 4. Chapter number 1st, heating and cooling. Topic: heat is about moving particles. Summary of the chapter. In this chapter we will discuss heating and cooling, temperature and heat. Heat is about moving particles, transfer of heat, emitters, observers and vacuum flask. Objectives of today's lesson are: you will be able to describe heat is about moving particles. Now, chapter number 1st, heating and cooling. Heat is about moving particles. Kinetic theory. You have learned that everything is made of particles called atoms or molecules. They are constantly on the move. The movement of particles is affected by temperature. The higher the temperature, the faster particle move, and vice versa. This is known as the kinetic theory. हीट मूविंग पार्टिकल्स के बारे में है और काइनेटिक थ्योरी हीट से रिलेटेड है। आप लोगों ने ये सीखा है कि हर चीज़ एटम्स या मॉलिक्यूल से बनी है और वो एटम या मॉलिक्यूल्स मुस्तकिल हरकत में होती है। टेम्परेचर से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मुतासिर होती है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है तो पार्टिकल्स का मोशन तेज़ होता है और टेम्परेचर जितना कम होता है तो पार्टिकल्स का मोशन कम होता है। तो ये काइनेटिक थ्योरी है। हीट एनर्जी एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हमने ये पढ़ना है कि मैटर की कौन सी हालत में एनर्जी ज़्यादा होगी और कौन सी हालत में एनर्जी कम होगी। जिस तरह हमने काइनेटिक थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि जब मोशन ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होती है तब हीट एनर्जी ज़्यादा होगी। Solid do not contain a lot of heat energy because the particles in solids are tightly packed and can only vibrate. For example, ice. सॉलिड्स में हीट एनर्जी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होती है और सिर्फ वाइब्रेट हो सकती है। मिसाल के तौर पर आइस, क्योंकि आइस सॉलिड है। लिक्विड्स हैव मोर हीट एनर्जी देन सॉलिड्स बिकॉज पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एज कंपेयर टू सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल वाटर। लिक्विड में सॉलिड से हीट एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि सॉलिड्स के मुकाबले में लिक्विड में पार्टिकल्स आसानी से मूव करती है, तो पार्टिकल्स के प्री मोशन की वजह से लिक्विड में हीट एनर्जी ज़्यादा होती है। गैसेस हैव मोस्ट हीट एनर्जी बिकॉज पार्टिकल्स मूव वेरी क्विकली एंड आर फ्री टू मूव एनी डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल स्टीम। गैसों में सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी होती है क्योंकि गैस में बहुत तेज़ी से पार्टिकल्स मोशन करते हैं और किसी भी सिमत में मुंतकिल होने के लिए आज़ाद होते हैं। तो हीट एनर्जी का डिपेंड पार्टिकल्स ऑफ मोशन पर है। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स में जस्ट वाइब्रेशन होती है तो ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं होती। लिक्विड में पार्टिकल सॉलिड्स के मुकाबले में ज़्यादा मोशन करती है तो हीट एनर्जी सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड में ज़्यादा होती है। और गैस में पार्टिकल्स फास्ट मोशन करती है तो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी गैसेस में होती है। द काइनेटिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन हाउ सब्सटेंसेस बिहेव। अभी हमने ये पढ़ना है कि काइनेटिक थ्योरी ये भी एक्सप्लेन कर सकता है कि जब सब्सटेंसेस को हीट सप्लाई होता है या सब्सटेंसेस से हीट रिमूव होता है तो सब्सटेंसेस किस तरह बर्ताव करती है। लुक एट द पिक्चर। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और हीट एंटर होता है तो दिस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या लिक्विफाइंग कहते हैं। और जब लिक्विड गैस में चेंज होता है लेकिन हीट बाहर से सप्लाई होता है तो इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। और इवापोरेशन क्या है? जब सराउंडिंग से हीट सप्लाई होता है, बाहर से हम हीट नहीं देते हैं और लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। अभी रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होता है जब गैस से हीट रिमूव होता है और गैस लिक्विड में चेंज होता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसिंग या लिक्विफाइंग कहते हैं। और जब मजीद लिक्विड से हीट रिमूव होता है और लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग या सॉलिडिफाइंग कहते हैं। ऊपर जो सब्लाइमिंग लिखा है तो सब्लिमेशन क्या है? जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है इस प्रोसेस को हम
सब्लिमेशन कहते हैं कि सॉलिड को हम इतना हीट देते हैं कि वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। अभी आप लोगों ने किस तरह इन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करना है। मेल्टिंग द प्रोसेस बाय विच सॉलिड इज चेंज इनटू लिक्विड स्टेट बाय सप्लाइंग हीट। फॉर एग्जांपल, आइस चेंज इनटू वाटर। Evaporation, the process by which liquid is changed into gaseous state at any temperature. For example, drying the cloth in open atmosphere. Condensing, the process by which gas is changed into liquid state by removing heat. For example, steam change into water. Freezing, the process by which solid change into liquid state by removing heat. For example, water change into ice. And sublimation, the process by which solid directly change into gaseous state is called sublimation. Now mass is conserved. इसका मतलब क्या है? Mass will be same if one state of matter change into another state of matter. For example, if 1 kg of water change into ice, the mass of ice will be also 1 kg. And if 1 kg gas change into liquid, the mass of liquid will be also 1 kg. जब मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में बदल जाती है तो मास सेम ही होगा। अगर 1 किलो पानी बर्फ में बदल जाए तो बर्फ की मास भी 1 किलो होगी, और जब 1 किलो गैस लिक्विड में बदल जाए तो लिक्विड की मास भी 1 किलो होगी, एंड सो ऑन। टू क्लियर योर concept, I would like to share a video with you all. Have you ever wondered why ice turns into puddles of water on a sweltering day? Keep watching and you'll find out. On Earth, materials exist in one of 3 main states of matter: solid, liquid, or gas. Materials can change between these states. When a state change occurs, a substance's property will also change. Maybe not too surprising. However, if the state change is reversed, the substance will recover the properties it had to begin with. Neat. Matter can transition between the 3 states when heated or cooled. But why is heat key in all of this? When a material is heated, it absorbs heat energy. This additional energy can cause attractive forces between molecules to break. This leads to rearrangements of the particles because the attractive forces no longer hold them together as tightly. The same happens when a liquid is heated. The attractive forces between the molecules break, leading them to become more widely dispersed and a gas to form. These 4 words describe changes in state. Do you know which word refers to which change? Pause the video, fill in the gaps, and click play when you're ready. Did you get them right? Do you know the difference between evaporation and boiling? Both are when a substance transforms from a liquid to a gas. Think of a boiling pan of water. All of the water bubbles. This is because all of the particles have enough energy to become gaseous. But water standing in a pan that is not being heated by anything other than the environment can also turn into a gas. This is evaporation. Only the particles at the surface have enough energy to change from a liquid to a gas. Hence, evaporation is a slower process than boiling, even though it achieves the same state change. Both are types of vaporization. The opposite of these vaporization processes is condensation, the transition from a gas to a liquid. Think of a cold can of soda on a hot day. Those water droplets on the outsides, or the dew on the grass in the morning, or the steamed up mirror after a hot bath, even the clouds in the sky, or a foggy windscreen in a car. These are all examples of condensation. Water vapor in the air has cooled down to form liquid droplets of water. Now let's think about the transitions between solids and liquids, so melting and freezing. Think of the Arctic sea ice. In the summer, when air temperatures are warmer, more heat energy is absorbed by the ice. This causes bonds to break between the ice's water molecules and the ice starts to melt. The solid ice becomes liquid water. But in the winter, the air temperatures are colder, and so seawater freezes, and the ice starts to form again. There is less heat energy within the ice, and so more bonds can form, holding it together as solid ice.
So far so good. But did you know that sometimes when solids are heated, they can turn straight into gases? This is called sublimation. This is only demonstrated by particular materials such as solid carbon dioxide, also known as dry ice. When subjected to a certain pressure, it will turn straight into gaseous carbon dioxide. Liquid carbon dioxide does exist, but it only occurs under very high pressures. Similarly, gases can turn straight into solids when cooled. This is called deposition. Let's check out how much you remember about the changes of state. Pause the video and fill in the blanks. Did you remember them all? Our final thing to discover is that when a material changes states, the mass stays the same. The density changes, so the mass per unit volume, but the mass does not change. Our glass of nice cold Coke weighs the same whether the ice is solid or when the ice has melted. So there we have the changes of state. Just remember that the mass stays the same whatever the state. Thank you so much. If you are facing any problem related to the topic, you can contact me.